लव अग्रवाल మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. सफल नहीं हो पाए हैं लोगों को कि वो पूरी तरीके से जागरूक हों। आज भी जो बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की सारी चीफ सेक्रेटरीज के साथ, उसमें यही बात हुई कि लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए सोशल डिस्टेंसिंग की ओर, प्लस लोगों में वो पैनिक ना क्रिएट हो कि एसेंशियल सर्विसेज या गुड्स उनको नहीं मिलेंगी, इसीलिए वो जा कर के क्राउड राउंड ना करें शॉप्स में। इसके बारे में भी जागरूकता फैलाएं। कुछ यूटीज और स्टेट्स इनोवेटिव मेजर्स के साथ भी आ रहे हैं कि कैसे वो होम डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकें, उस पर भी चर्चा हुई। और स्टेट्स जो हैं वो विभिन्न प्रावधानों के नीचे वायलेशंस को बुक भी कर रही हैं, तो मतलब वो एनफोर्समेंट मेजर्स भी कर रही हैं, जहां ज़रूरत पड़ रही है वो अरेस्ट भी कर रही हैं, सीजर्स भी कर रही हैं, FIRs भी रजिस्टर कर रही हैं। तो हर तरह का एज यू नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, लोगों को घर पे रखना और सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करना, तो दोनों तरीके से जागरूकता भी बढ़ा करके एनफोर्समेंट भी करके स्टेट्स इसमें लगी हुई हैं। क्वारंटाइन के ऊपर एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश से आए सभी लोगों तक पहुंच गया है? इनमें से कितने लोग होम क्वारंटाइन में हैं? और साथ में एक सप्लीमेंट्री है, प्लीज क्लैरिफाई ₹50 lakh per worker is for medical insurance, also includes the life insurance. I think this relates to the finance, but you can take the part related to the health ministry. So, as far as people who have come up in last few days, particularly once we had actually, toughened our measures of travel restrictions, around 64,411 people had been brought into surveillance. And out of these also around 8,300 people are having surveillance and quarantine at the facility level, and remaining people are at home quarantine. This, let me also highlight, this is the figure which has been done at the airport. Besides this, earlier to the travel restrictions for few countries, lot of people have otherwise also come into the country, and states are monitoring those people also in terms of their home quarantine. Number 11. Mr. Agarwal, since you talked about the drop in the peak, drop in the numbers, so I want to know, have you assessed when are we going to reach our peak, or probably a plateau, as we say? Madam, I did not mention drop in numbers. I want the level of alertness to continue, the level of involvement and implementation of all measures to continue with the same level of alertness. I only am saying that while numbers are increasing, but the rate at which numbers are increasing appear to be not higher, or it is appearing to be relatively stabilizing. But this is only a very initial trend, and this is a function of how effectively people follow social distancing measures. I am only highlighting this point to appeal to everyone that if we collectively work hard, if we collectively ensure proper lockdown measures, probably we will be able to ensure that this trend continues and country can come out of the problem related with COVID-19. 41. My question is to Dr. Ganga Khedkar. Sir, today the Delhi government announced that they will be sending the samples of all the healthcare workers who are involved in the treatment of corona patients, as well as all the SARI patients that are admitted in government hospitals of the Delhi government, as well as central government hospitals like AIIMS and Safdarjung. Do we have any numbers of how many total samples are being sent, and whether this will become a pan-India decision as well anytime soon? Will be all SARI patients across hospitals be tested? नहीं, इसमें जो गाइडलाइन हमने इशू किए थे टेस्टिंग के लिए, यानी क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करें, उसमें सारी तो इंक्लूडेड था। जब पहले दिन हमने एक बात बोली कि कितने केसेस कम्युनिटी में, जब हम सर्वे कर रहे थे सारी का, उसमें कितने हैं केसेस करके जो हॉस्पिटल का देख रहे थे, उसके दूसरे दिन ही हमने गाइडलाइन बदली। वो गाइडलाइन में हमने क्लियर कट लिखा कि सारी पेशेंट्स को टेस्ट ऑफर किया जा सकता है। अब रहा सवाल आपका कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को टेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, जिसको लक्षण हैं ऐसे हेल्थ केयर वर्कर को ही टेस्ट किया जाए, ये हमने समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात, क्या हमको ये नंबर मालूम है? नंबर मुझे मालूम नहीं है कि कितने उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और भेजे होंगे।
चौथी बात आप पूछ रहे थे कि क्या उससे टेस्टिंग के इसमें तकलीफ होगी, विल वी बी स्वैम्प्ड विद द सैंपल्स? वी डोंट थिंक सो, वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स. सर एक सप्लीमेंट्री इसी से रिलेटेड है. गिवन दैट द एल्डरली आर मोर एट रिस्क, is there any system in place for mapping, testing, treating of the elderly population in the country? Only for elderly people, this specific question.